નમસ્કાર, બૌદ્ધિક ભારત ગુજરાતી ન્યૂઝ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। ખેડબ્રહ્મા શહેર ખાતે સંત શ્રી આસારામજી બાપુના સાધકોએ હરિનામ સંકીર્તન યાત્રા કાઢી હતી। આદરણીય સંત શ્રી આસારામજી બાપુ પ્રેરિત શ્રી યોગ વેદાંત સેવા સમિતિ દ્વારા આયોજિત હરિનામ સંકીર્તન યાત્રાનું સોમવારે સવારે વડાલી અને હાથરવા ગામમાં પ્રભાત ફેરી કાઢી સવારે 9 વાગ્યા આસપાસ ખેડબ્રહ્મા શહેરમાં આગમન થયું હતું। અહીંયા સંકીર્તન યાત્રા જ્યોતિ હાઈસ્કૂલથી પ્રારંભ થઈ પેટ્રોલ પંપ, સરદાર ચોક, શ્રીયાદેવી ચોક, શીતલ ચોક, કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવ મંદિર, સાબર શીત કેન્દ્રથી પસાર થઈ ખેડબ્રહ્મા અંબિકા માતાજીના મંદિર ખાતે સમાપ્ત થઈ હતી। પૂજ્ય સંત શ્રી આસારામજી બાપુ સમજાવે છે કે કળિયુગમાં સંકીર્તન કરવાથી જ જીવો મુક્તિના હકદાર બને છે। હરિનામ એ ચિંતામણી સમાન છે જે બધી ઈચ્છા પૂરી કરી શકે છે। કળિયુગમાં નામ સંકીર્તન સિવાય મુક્તિનો બીજો કોઈ સરળ માર્ગ નથી। સમિતિના પ્રવક્તાએ માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે પરમ પૂજ્ય સંત શ્રી આસારામજી બાપુની પવિત્ર પ્રેરણાથી શ્રી યોગ વેદાંત સેવા સમિતિ ગુજરાતભરમાં કીર્તન યાત્રા કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે। યાત્રા દરમિયાન લોકોમાં સત સાહિત્ય અને પ્રસાદનું વિતરણ કરવામાં આવે છે। પૂજ્ય બાપુશ્રીની પ્રેરણાથી વિશ્વભરના સાધકો દ્વારા હરિનામ સંકીર્તન યાત્રા, બાળ સંસ્કાર કેન્દ્ર અને વિદ્યાર્થીઓના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય નિર્માણ શિબિર, યુવા ઉત્કર્ષ માટે યુવા તેજસ્વી શિબિર અને મહિલા ઉત્થાન માટે ચાલો સ્વ તરફ જઈએ જેવા અનેક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવે છે। पूज्य बापूजी की पावन प्रेरणा से प्रतिवर्ष दीपावली निमित्त 7 दिवसीय यात्रा होती है। इसी प्रकार इस साल भी 7 दिवसीय यात्रा का आज छठा दिन है। थराद से प्रारंभ हुए थे, उधर महसाणा, पाटन, धानेरा, डीसा, पालनपुर, सिद्धपुर, ऊंजा होते हुए आज खेड़ब्रह्मे और अब अंबाजी आबू रोड तरफ जाएंगे। तो इसमें जो पूज्य बापूजी के पावन सानिध्य और सत्संग साहित्य द्वारा जो हमें लाभ हुआ है वो लाभ जनमानस को मिले, इस निमित्त कीर्तन यात्राएं करते हैं, साहित्य बांटते हैं, प्रसाद बांटते हैं। और हम सभी जो भक्त हैं वो पूज्य बापूजी की पावन प्रेरणा से जो हमारा जीवन सुख में, आनंद में हो गया, वैसा जीवन पूरे भारतवर्ष का हो और भारतीय संस्कृति और भारत विश्व गुरु बने। तो ऐसे महापुरुषों का स्थान जेल मंदिर न होकर हमारे बीच होना चाहिए। इसलिए हम जनसंपर्क जनता से मिल रहे हैं, क्योंकि कई राजनेताएं और लगभग यूँ मानो कि सभी प्रकार की पार्टियां अपनी अपनी रोटियां सेक रही है। पूज्य बापूजी जो निर्दोष होते हुए भी जिन्होंने देश और संस्कृति के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, उनके लिए किसी की तरफ से आवाज़ नहीं उठ रही है, बल्कि उन्होंने बापूजी के नाम पे अपनी रोटियां सेकी और आज भी वो राज कर रहे हैं। तो हम जनमानस को ये समझा रहे हैं कि ये सरकारें, राजनेताएँ जो हमारे होते हैं, हमारे द्वारा निर्मित होते हैं, तो हम जनमानस को पूज्य बापूजी की सच्चाई से अवगत करा के उनको बता रहे हैं कि ऐसे बापूजी के लिए हमें मिलकर आंदोलन करना चाहिए और बापूजी हमारे बीच होने चाहिए। हमें किसी सरकार या राजनेताओं की गुलामी न करते हुए हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी है कि हिंदुस्तान जो हिंदू धर्म प्रधान देश रहा है और ऐसे हिंदू प्रधान देश के अंदर संतों में शिरोमणि संत श्री आसाराम जी बापू जो जेल मंदिर में हैं, तो राजनेताएं और जो अपने आप को बड़े धर्म के ठेकेदार मानते हैं, उन सबको यही संदेश देना चाहते हैं कि जनमानस को जागृत हो रहा है और पूज्य बापूजी की रिहाई के लिए आप मांग करिए, आंदोलन, और हमें रिहाई दीजिए पूज्य बापूजी को, वरना हम जो सहिष्णु हैं कहीं न कहीं उग्र बनना पड़ेगा। क्योंकि आज तक हमने 10 साल तक एक भी दिन न ट्रेन रोकी न बस रोकी, देश की संपत्ति का 1 रुपये का भी नुकसान नहीं किया, क्योंकि बापूजी हमें यही शिक्षा देते हैं कि देश, ये धर्म, ये संस्कृति हमारी है, हमें रक्षा करनी है। पर जब रक्षा करते करते भी हमें इतने अत्याचार सहने पड़ते हैं तो कहीं न कहीं हमें आंदोलन पे भी उतरना पड़ सकता है। इसलिए सभी से यही निवेदन है कि स्थिति को शांतिपूर्वक बनाए, जो हमने रखी है वो शांति बनाए रखे, इसको कायरता न समझे और जल्दी से जल्दी पूज्य बापूजी को रिहा करें। रिपोर्टर चंद्रशेखर भावसार, खेड़ब्रह्मा।